श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखंडे अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। सनत्कुमारोवाच तस्य लिङ्गतज्ञयक्षस दैत्यराजो गदां गृहीत्वा त्वरितससैन्यं कृत्वा सौग्रेगलानां ध्येयं सुदारुणो देववरे रभेदयं गुहामुखं प्राप्य महेश्वरस्य बिभेद शस्त्रैर्शनिप्रकाशे अन्यो ततो वीरकमेव शैलसुतां तथान्यद्वारं हि केचिदुरुचिरं बभुजुं पुष्पाणि पत्राणि विनाशयेयुः फलानि मूलानि जलं च हृद्मुद्यानमार्गनापि खण्डयेयुः विलोडयेयुर्मुदिताक्ष केचिच्छृङ्गानि शैलस्य च भानुमती ततो हरा संस्मृतवान् स्वसैन्यं समाहव्यन् कुपितशूलानि भूतानि चानयानि सुदारुणानि देवांस सैन्यान् सह विष्णुमुख्यान् आहुतमात्रान् नुग्नासैसन्या रथैर्गर्जे वार्जिवृक्षैक्षगोभिः उष्टरे खरे पक्षिवरैक्ष सिंहस्ते सर्वदेवा सहभूतसङ्गे व्याघ्रे मृगे सुकरसारसैक्ष समीनमत्तस्य से शिशुमारमुख्य अन्यैक्ष नानाविधजीवसङ्घैर्विकीर्णदशेन सुफिटिते शमशाने भुजङ्गमे प्रतशते पिशाचे दिव्यैर्विमाने कमलाकरैक्ष नदीनदे पर्वतवाहनैक्ष समागता प्राञ्जले प्रणम्य कपिर्दिनं तस्तुर्दीनसत्त्वा सेनापतिं वीरकमेव कृत्वा विसर्जयामास रणाय देवानिक्रान्तवाहानथ तदित्पिनाकी युधे स्थिरं लब्धजयं प्रधानं सम्प्रेषितास्ते तु महेश्वरेण चक्रुयुक्रान्त प्रतिमं च युतं मर्यादहीनं सगिलेन सर्वे दैत्येन्द्रसैन्येन सदैव घोरं क्रोधा निगीर्णाश्रिदिशास्तु शङ्खचे तस्मिन्क्षणे युध्यमानाक्ष सर्वे ब्रह्मोन्द्रविष्णुकर्षशाङ्कमुख्या आस्निर्गीर्णा विकसेन तेन सैन्यनिर्गेणस्थितु वीरकोहे विहाय सङ्ग्रामशिरोगुहां तां प्रविश्य शर्वप्रणिपत्य मूर्धना प्रवाच दुःखाभिता स्मरारिन् सुवीरको वागिम्बरोऽथ वृतं नरकीनते सैन्यविघस्तीति जिनाग भगवन्यै निर्गिनोरसो विष्णुस्त्रिभुवनगुरुर्दैत्यदलना निर्गीना चन्द्राको द्रुहिन्मघवानो च वरदो निर्गीनास्ते सर्वे यं वरुणवाताक्षधनदा स्थितोऽस्म एकबृहद् किमिह कर्ण्ये भवतु मे अजयो दैत्येन्द्र प्रमुदितमना दैत्यसहिता अजेयं त्वां प्राप्त प्रतिभयमना मारुतगति स्वयं विष्णुर्देव कनकशिपुं कश्यपसुतं नखैस्तीक्ष्णैर्भक्तया तदपि भगवान् चेष्ट वशगा प्रवृत्तिस्त्रैलोक्यं विधं तुमलं व्यातवदना वसिष्ठ्यादिसप्तो भुवनपतिभिः सप्तमुनिभिस्तथा भूते भूयुस्तवमिति सुचिरं दैत्यसहिततस्ते नौकास्ते प्रणयवचनैरात्मनि हिते कदास्माद्वे घोराद्वती मम मोक्षो मुनिव्रा यथा क्रुद्वैरुक्तो विघ्सहरणाधुद्य समय ततो घोरे वर्णाविर्दिलितमुखे मुष्टिभिर्लं बध्यार्घयारण्ये नैनु हरिगृहे पुण्यवस्तो विसन्तभयात्मान् विगतकलुषो यायसि परं ततस्तेषां वाक्यात् प्रतिदिनमसो दैत्यगिलनात्
क्षुधार्थ संग्रामाद भ्रमति पुनरामोदमदुता तं क्षेद घोरं जगदुदित तयो सूर्य शनि शशिनो यथा शुक्रस्तुभ्यं परमरिपुरत्यन्त विक्राहतान् देवै दैर्दयान् पुनर्मृत्विद्यास्तुतिपते सर्वीर्यान् श्रेष्ठान् वरन् शतवियुक्तान् प्रकृते वरं प्राणास्तया जास्यास्तमं तु संग्राम समय भवान साक्षीभूता क्षणमपि वृत्तकार्यकरणे सनत्कुमारवाच अतीदं सत्पुत्रात् प्रमथ पतिराकर्ण्यकुपिताक्षिरं ध्यात्वा चक्रे त्रिभुवनपति प्रागुनोपमं प्रगायात् सामाख्यं दिनकरकराकारकुशा प्रहासात्तन्नाम्ना ददनु निहितं तेन च तमा प्रकाशे स्मिन् लोके पुनरपि महायुद्धं क्रोधरणे दैत्य सार्धं विकृतवदनैर्वीरत्वमुनि शिलाचूर्णं भुक्त्वा प्रवरमुनिना यस्तु जनिता सकृत्वा सङ्ग्रामपुरमपि पुरा यक्षजितवान् महारुद्र सद्य स खलुदिति जेनातिगिलितस्तत्क्षासो नन्दी निशितशरशूलासि सहतिता प्रधानो योधानां मुनीश्वर शतानामपि महानिवासो विद्याना शमदं महाधैर्यसहिता निरीक्ष्यैवं पक्षादृशभवर्मारुद्य भगवान् अर्दियुदार्थी विघसति द्विजं सम्मुखमुखा जपिन् दिव्यं मन्त्रं निगलन् विधानो त्रिदिलनिकं स्थितं संज्ञ च कृत्वा धनुर्शनिकल्पान् नपि शरान् निष्क्रान्तोऽसौ विगसवदनादिरकमो निर्गृहीत्वा तत्सर्वे स्वबलमतुलं विष्णुसहिता समुदीर्णा सर्वे कमलजलारीनदुदिनपा प्रहृष्टं तत्सैन्यं पुनरपि महायुद्धं युद्धं करोत् जिते तस्मिन् शुक्रस्तदनुदिति जान्युगदवीः तान् यदा विदावीर्यात् पुनरपि सजीवान् प्रकृते तदा बद्ध्वा नीतपशुरिव गणैर्भूतपत्ये निर्गीनस्तेनासो त्रिपुरो रिपुना दानवक्रू विनष्टे शुक्राख्ये सुररिपुनिवासस्तदखिलो जितो धवस्तो भद्रो वृष्णमपि सुरैक्षापि दलितं प्रभूतैर्भूतौघे दिर्तिजकुन्पग्रासरसिके सरुण्डर नृत्यदिनिर्निश्चितशर शकत्युद्धृतकरे प्रमर्ते वैताले सुदृढकरतुण्डैरपि खगैर्वृक्केण नार्णाभेदे शवकुन्पूर्णा यस्य कवले विकीर्णे सङ्ग्रामे कनकशिखोर्वशजनिस्तिशिरं युद्धं कृत्वा हरिहरमहेन्द्रक्षविजिता प्रविष्टे पाताले गिरिजलन्धिरन्ध्राण्यपि तथा तत्ता सैन्यक्षीणे दितिज वृषभक्षान्धकवरा प्रकोपे देवानां कदन्तवरो विशदलनो गदाघातैर्घोरविर्दिलित मत्शापि हरिणा न वै सङ्ग्रामस्त्यजति वर्लब्ध किल यतस्तदा ताडेर्घोरस्त्रिदश पतिना पीडिततनु तथा शास्त्रोस्रोघ्रेस्तरु गिरिजलैक्षाक्षु विबुधा चिकायोचर्ग जर्णं प्रमथपति माहूय शनके स्थितो युधं कुवर्णिरन् पतित शस्त्रैर्बहुविधे परीक्षणे स्वस्तेस्तनु गिरिजारुद्र मतुतत् तथा वृक्षे सर्परे शनि निवैः शस्त्रपटले विरूपैर्मार्याभिः कपटरचना शम्भर्षते विजेतुं शैलेशं कुहुकं परं तत्र कृतवान् महासत्त्वो वीरस्त्रीपुरीप्तुलुक्षमतिमान् न वध्यो देवानां वर्षत्मानोन्मादविवशा प्रभूते शस्त्रास्त्रे सपदि दितिजो जर्जरतनु
तदीयाद्विषन्दादिक्षितिर्लग्तैरन्धक गणैरतिव्यापतं घोरं विकृतवदनं स्वात्तमसदृशं दधत् कल्पान्ताग्निप्रतिम वपुषा भूतपतिना त्रिशूलेनोदिन स्त्रीपुररिपुना दारुणतरं यदा सैन्यात् सैन्यम् अशुपति हतादन्यद्भद्रवर्णोत्थैरत्ययुष्णे पिशित निःसृतैर्बिन्दुभिर्लं तदा विष्णुर्योगात् प्रमथपतिमाहूय मतिमान चकारोग्रं रूपं विकृतवदनं स्त्रैणं जितं करालं संशुष्कं बहुभुज लताक्रान्तकुपितो विनिष्क्रान्तं कर्णादनि शिरसि शम्भोक्ष भगवान् प्रणस्था सा देवी चरण्ययुगलालङ्कृतमही स्तुता देवै सर्वैस्तनु भगवान् प्रेरितमति क्षुधार्ता तत्सैन्यं दितिजनिस्रतं तच्छ्रुद्रं पपोसात्ययुष्णं तद्रन् शिरसि सुसृक्कर्धमलं ततस्तत्त्वेको दैत्यस्तदपि युयुधे शुष्करुधिरस्थलाघातैर्घोरे शनिनिसदृशर्जानुचरणे नखैर्व्रजाकारे मूर्खभुज शिरोभिषच गिरीशं स्मरन् शास्त्रं धर्मस्वकुलविहितं शाश्वतमजं रणेशान्तं प्रक्षात् प्रमथपतिना भिन्नहृदये स्त्रीशूले सम्प्रीतो नभसि विधृतः स्थाणु सदृशा अधाकाय शुष्कस्तपनीकरणे जीर्णतनुमुञ्जाला सारे मर्घे पवनसहिते कलेदितवतु विशीर्णस्ति गमांशोस्तु हिंशकलाकारशकलस्तथा भूता प्राणास्तदपि न जहो दैत्यवृषभा तदा तुष्टः शम्भुः परं करुणावरारिधिरसो ददो तस्मै प्रीत्या गणपतिपदं तेन विनुता ततो युध्यस्यान्ते परमनुतिभिस्तुष्टु उरुलं नत्सकन्धाभृता जय जय गिरं प्रोच सुखिता हरस्तस्ते सार्धं गिरिवरगुहायां प्रमुदितो विसृज्यैकानशानं विविधा बलिना पूज्यसङ्गान् चक्राज्ञां क्रीडां गिरिवरसुतां प्राप्य मुदितां तथा पुत्रघोरा दीघस्वदनान् मुक्तमनघम् इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखंडे अंधक वधोपाख्याने अंधक युद्धवर्णन नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः।